जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया था एंड दैट वाज अबाउट 30 डेज पावर बीआई सीरीज। तो आज उसी पावर बीआई सीरीज का पहला दिन है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड लेट्स जॉइन ऑल टुगेदर टू स्टार्ट पावर बीआई जर्नी विद मी। दिस इज द डे वन ऑफ लर्निंग पावर बीआई. If you are visiting my channel very first time or you have not subscribed my channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that you start getting notifications for my upcoming videos. Welcome to day one of Power BI series. In this video, I'm going to explain about what is Power BI. We will know about Power BI interface and how to install Power BI in your laptop and in your desktop. So let's switch to my computer screen. दोस्तों यहाँ से हमारे पावर बीआई की जर्नी स्टार्ट होती है। 30 डेज का ये कोर्स है। इसमें आपको पावर बीआई सिखाया जाएगा फ्रॉम स्क्रैच, हाउ यू कैन इंस्टॉल पावर बीआई इन योर डेस्कटॉप, how you can create a dashboard, interactive dashboards, how you can create. So we will cover everything in 30 days, day by day. You will be getting videos on our YouTube channel. So let's get started. Introduction to Microsoft Power BI. So we will understand what is Power BI and the use case, where we can use and how we are using it. Okay, so Power BI, the cutting edge business analytics tool. Okay, so what we are going to do in this, raw data. From raw data we will transform it through Power Query, and then we will create a dashboard. So let's understand. Next is, what is Microsoft Power BI? So Microsoft Power BI is a cloud-based business intelligence service that provides a single view of your most critical business data, accessible from anywhere with internet access. Okay, so if you have created a report in Power BI, you can share it with your audience, you can share it with your stakeholders, so they would be able to see it through mobile or through their laptop, and it's easy to use. Okay, let's move to a next slide. Okay, so this is how your Power BI will look like. Okay, once you are done with the installation, this is how it will look like. So let's understand the interface of Power BI, how it will look like. So जो ये सबसे पहला टैब है, okay, so if I show you this tab, होम, फाइल, इंसर्ट, मॉडलिंग, इसको जाना जाता है टैब एरिया के नाम से, इसको बोलते हैं टैब एरिया। ये सब हमारे टैब्स हैं, सो दीज आर द टैब्स। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो अंडर टैब, these are the ribbons. Okay, if I zoom in, so these are the ribbon, this is ribbon, this is called as ribbon, and under that this is a group, let's say a data group, queries group, insert group. Okay, so this is called ribbon area. Okay, let's move to our next slide. This is pane area. Okay, so you will have three options there: filter pane, and visualization, and data pane. So this is the pane area. Let's move to our next slide. This is view pane. So what you will see, the first is for report view. This is a default page. As soon as you log in, this is how the interface will be. So this is the report view, and that is default. Moving to our next slide. Okay, so this is table view. So whatever data we have or tables you have, that will be visible in this area. Okay, so that will be visible in this area. Okay, so next is model view. So whatever relationship you want to build in between the fact table and the tables, so we can create it here. So ये है हमारा model view. Okay, okay, let's go to a next one. This is the DAX query view. यहाँ पर आपकी जो DAX जो query है उनका view ये यहाँ पर you can write DAX, you can
You can write those DEX functions here. So this is for DEX query view. Okay, let's move. So the entire area is known as view area. Okay, moving we have the next slide. So this is our canvas area, we known as canvas and or workspace area. So whatever you are going to do, you have to do it here. If you are going to create any chart, anything, so that will come over here. Okay, so this is known as canvas or workspace area. Moving to our next slide. This is the page navigation area. So you can, like Excel, similar to Excel, you can add, delete the page, you can rename it, and this is the view. You will be able to see a small table here. This is for desktop, this is for mobile view. Okay, similarly you can add or delete pages, you can rename it. So this is known as page navigation area. Okay, moving to our next slide. So if you see, this is a ribbon, tab ribbon. Okay, report view is the default view, data view show your data, model view build relationship in data. Okay, as I explained, filter pane, visuals pane, data pane or field pane. And this is the dashboard, canvas or workspace, as I already explained in the previous slide. And this is the page navigation. Okay, so this is all about the Power BI interface. Okay, So let's understand how we can download Power BI desktop in our system. So सबसे पहले हम लोग दो तरीके से इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करने के बाद टाइप करना है पावर बीआई। पावर बीआई पर क्लिक सर्च करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास आएगा। ठीक है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ऑप्शन आ रहा है गेट। गेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या है, आपका डाउनलोड होगा और डाउनलोड के बाद इंस्टॉल भी हो जाएगा इमीडिएट। तो वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल होता है। सो इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ओपन ऑप्शन आने के बाद समझ लेना है कि ये आपका इंस्टॉल्ड हो गया है। अब इस पर आप क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ओपन पर, तो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो आपके सिस्टम पर ओपन हो जाएगी। तो आप देखो ये यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन होने जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग का पावर बीआई ओपन हो जाएगा। ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सब वही इंटरफेस आपको दिखेगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज है। आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। टाइप कीजिएगा पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड। तो आप इस पेज पर लैंड होने के बाद हमको ये ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप फ्रॉम ऑफिशियल। इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपके पास ये पेज ओपन होगा। पेज ओपन करने के बाद यहाँ आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट लैंग्वेज में आप इंग्लिश ही रहने दें। और यहाँ पर एक ऑप्शन है डाउनलोड। डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही डाउनलोड होगा उसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड हो गया। अब इसको देखते हैं आप इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इस पर आप डबल क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, सो डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो का पॉपअप आएगा। ठीक है, आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट रहने दें। क्लिक करना है आपको नेक्स्ट। इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मिलते हैं उस पर आप ओके नेक्स्ट करने के बाद आपको मिलेगा फिनिश। फिनिश करने के बाद आपका इंस्टॉलेशन डन हो जाएगा। this is all about for this video. So we covered Power BI and Power BI interface. In our upcoming video, we will be covering the rest of the topics. Make sure you follow us on Instagram, you follow us on YouTube, subscribe our channel, hit the bell icon, so you will start getting notifications. As soon as we upload our next video, you will have a notification there, so you can go through that video
and you can watch it out. So that's all. See you in our next video. Thank you so much for joining this session.